शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है संडे, तो मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ और सूर्य नारायण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है संध्या वेले का 6:42। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आज डेट है संगत जी 5 अप्रैल 2026। तो अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरुजी महाराज का बारंबार शुक्राना करती हूँ और बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए गुरुजी महाराज मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो आप इतने कष्ट काटते हो उसके अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बेटे के इतने कष्ट आते हैं सत्संग सुनवा के, गुरुजी महाराज इतना कष्ट काटते हैं। और सत्संग में भी बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं अनहोनी की जो डर भी लगता है। जैसे एक माँ बच्चे के लिए मतलब कुछ गलत मतलब ऐसे अनहोनी वाले शब्द होते हैं, उससे सुन के पढ़ के डर भी जाती है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज इतनी कृपा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज था, अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। आज तू घर पर है लेकिन सचखंड से तुझे आशीर्वाद भेजा जा रहा है। शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और तेरे काम में तेजी से पूरे होंगे। ये सैटरडे अलग है, ये तेरे लिए लिखा गया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हर घर में खुशियां बरसे, हर घर में पूरा परिवार, बच्चे बड़े, सबको खुशी मिले। जिसके काम नहीं बन रहे उसका काम बने। गुरुजी महाराज सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो गुरुपा। और संगत जी, मेरे ना आज ना कई दिन से मेरे पास एक सत्संग आ रहा है बार बार। हाँ, 3-4 दिन हो गए कि बीच बीच में आता, लगातार नहीं आता, जैसे 1-2 दिन गैप करके, कि तेरे पति के दिमाग की नस फटने वाली है, ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो मैं जरूर सुनती हूँ गुरुजी महाराज, ये किसी के साथ ना हो। गुरुपा, ये ना सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देना गुरुजी महाराज। कोई भी दुख का कष्ट आता है संगत जी, मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज बस आप कष्ट ही कटवा दो सत्संग सुनवा के, चाहे ड्रीम में दिखा के, लेकिन हकीकत वाला ये दुख कभी ना आए गुरुजी महाराज। जो एक माँ बेटे और हस्बैंड के फैमिली के बीच का दुख होता है, ये हम नहीं देख पाते, नहीं झेल पाते हैं गुरुजी। जैसा कि आपको सब पता है, आपकी बेटियां परेशान होती हैं, परिवार में कुछ होता है, बच्चों को, हस्बैंड को। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उसके लिए आपको बारंबार शुक्राना और बारंबार नमस्कार करती हूँ। और संगत जी, मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ और उनके लिए अनंतम शुक्राना भी करती हूँ। पितृ देवता आप जहाँ कहीं भी हो, गुरुजी महाराज उनकी रक्षा करना। और कई बार मैसेज आता कि तेरे पितृ बंधे हुए हैं, ये सत्संग सुन के उनके कष्ट कटवा के छुड़वा ले। तो मैं सुन लेती हूँ संगत जी, लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं आया। अभी बीच में ब्लैक मैजिक के भी बहुत आ रहे थे, तो वो भी मैंने सुना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आँखों के भी मैंने सुने हैं। और बहुत सारे सत्संग आते हैं, खुशियों के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही आते हैं, मतलब दुख वाले, खुशी के भी आते हैं। तो शुक्राना बाबा, आप हर चीज का ध्यान रखते हो। और ये संध्या बेले का सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज। और संगत जी, आजकल मुझे ना गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो छोटी सी बटरफ्लाई मैंने आज दो देखी। एक पीली बटरफ्लाई थी, वो बिल्कुल सरसों के फूल वाली, वो थोड़ा दूर से, और एक तो मेरे यहीं बालकनी में पास में ही थी, वो थोड़ा डार्क जो ब्लैक डॉट डॉट होते हैं, छोटी सी थी। तो जरूर कोई कष्ट ही काटा होगा गुरुजी ने। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं अपने मायके परिवार से भी शुक्राना करती हूँ, अपने ससुराल परिवार से भी शुक्राना करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपने मामी मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, सबके कष्ट रोग दूर करना गुरुजी, बस आपका सेवा सुमिरन सब उसी में लगे रहें, किसी का छूटे ना और आपके ही ध्यान में सब रहें। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी भूल चूक हो मुझे क्षमा करना। और नीम करोली बाबा के भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा, सीताराम आप बोलते हो ना, बोलो बेटा सीताराम, तो सीताराम नीम करोली बाबा, और जो भी गलती है मुझे क्षमा कीजिएगा नीम करोली बाबा। तो जय गुरु जी, संगत जी, विपिन भैया, सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और पूरी टीम का भी बहुत बहुत थैंक यू है। और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जो हम संगत परिवार को मिला है। और विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी तरफ से है। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका ध्यान रखना गुरुपा, आपके ही सहारे हम संगत परिवार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, सबका कष्ट काटना गुरु जी महाराज, कष्ट काटने के लिए अनंतम ओम अनंतम नमः शुक्राना। शिवाय, शिव जी जय सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपने हस्बैंड को रिहैब से ले आई हूँ। मंडे का दिन था, आपका दिन। प्लीज़ गुरु जी, आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पर बरसाते रहिएगा, जैसे आप हम कर रहे हैं। प्लीज़ उसको इतनी ताकत दीजिएगा कि फिर से वो ड्रिंक्स को ना छुए। थैंक यू गुरु जी, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। आप ही की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि कोई ड्रिंक्स उसने नहीं ली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। कितने साल, 25 साल से मैं इसकी ड्रिंकिंग लेके परेशान थी, लेकिन आपने तो इसको बहुत ही जल्दी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो मुझे नया हाउस ब्लेस किया है, उसकी कबर्ड के चाबी में 777 था गुरु जी। व्हाट अ ब्लेसिंग यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की तरफ से गुरु जी, मैं बहुत डर रही थी कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी या डॉक्टर कुछ बहुत ही टेंशन वाली कुछ बात बोल देंगे, लेकिन गुरुजी आप तो रिपोर्ट चेंज करने में, आप ही तो रिपोर्ट चेंज कर देते गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ उनके हार्ट का केयर करना गुरुजी, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और मेरे हस्बैंड को ना ड्रिंक करने के लिए आपने इतना प्रेरित किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माय जय लाइफ। गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 3:30 और आज का डेट हुआ 6 अप्रैल। मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मंत्र जप से मैं शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मेरा सत्संग में विपिन अंकल और शमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको पूरी टीम को मेरी तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग गुरु जी तक पहुँचाती है, सारी संगत परिवार तक पहुँचा देती है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सत्संग बहुत जल्द अपलोड कर देती है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा आपके कमल चरणों में सिर झुका के दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारा सा शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी।
गुरुपा मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आपको चरणों में समर्पित है, तो आप स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुपा आज सोमवार है, मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ का दिन है, तो मैं सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग तो हर पल का है गुरुजी, हर सांस का है गुरुजी, हर दिन का है, हर सुबह का शुक्राना है और रात का शुक्राना है, नए दिन दिखाने का शुक्राना है, इतना अच्छा परिवार दिया है उसका शुक्राना है, हम लोग अच्छा है, सही है, ठीक है, उसका शुक्राना है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं बिल्कुल सही हूँ, पूरा परिवार सेफ है, उसका शुक्राना है गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग आज मेरे बच्चों के लिए है, जो गुरुपा ने इतना अच्छा मैसेज दे रहा है मेरे बच्चों के लिए, तो उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं पुत्र, बहुत जल्दी तेरे 2 सपने पूरे करने वाला हूँ, तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली है को तेरी आँखों में खुशी की आंसू होंगे। एक सपना तेरे बच्चे का लेकर पूरा होगा और उसकी चिंता करना छोड़ दे, वो मेरी शरण में है, तू बस मिठाई मांगने की तैयारी शुरू कर। शुक्राना बाबा, ये तो सब आप ही का है, आशीर्वाद है आप ही का है, मेहर है गुरुजी। शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं अपने डायरी में कोई पर नोट कर ले, आने वाले 2026 के 10 अप्रैल को तेरे घर में खुशियाँ की लहर आ रही है, तेरे ज़िंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है, बस शुक्राना करने में कंजूसी मत करना। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा आपको तो सब कुछ पता है बाबा, आप जान हो बाबा, आपको तो हर बात आप जानती है, हर मन की बात जानती है, सब कुछ पता है गुरुपा। वो 10 अप्रैल को आपका नातनी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, जो दिन फिक्स हुआ है, तो आप जाने बाबा, जो भी करना है तो कराने वाला तो आप ही होगा बाबा, खुशी देने वाला भी आप है गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप बहुत अच्छा करेगा, उनका रिज़ल्ट जो होगा बहुत अच्छा होगा बाबा, आप ही देख लेना बाबा, और आप ही वो खुशी देना बाबा, बहुत अच्छा होगा उनका रिज़ल्ट, मैं जानती हूँ। और मिठाई मांगने जो भी होगा बाबा, आप ही आपके लिए तो मैं हर पल के लिए मिठाई मांगने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, वो खुशी देने के लिए बाबा, वो ज़रूर होगा, मैं जानती हूँ बाबा, वो ज़रूर होगा। शुक्राना बाबा, उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए, इसका कारण उसकी जलन तुमसे, पर वो नहीं जानती रब के घर देर ज़रूर अंदर नहीं। मेरे बच्चे अगर सही है तो मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूँगा। आई लव यू बच्चे। कल्याण गीता। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। वो आप ही देख लेना बाबा, जो भी है बाबा वो आप ही देख लेना।
और गुरुपा कहते तेरे सभी शत्रु अब डरे हुए हैं, उनको रातों की नींद नहीं आ रही है। वो तुझ पर अपनी नज़र पड़ाए हुए हैं, हर पल साजिश चल रही है, पर अब वो तेरी ये बात करने के लिए तरस आएगी। तू बस अपने गुरु पर भरोसा रख और तेरा गुरु तेरे साए की तरह तेरे साथ है। तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सबको ही छोड़ दिया गुरुजी। हमारा पूरा परिवार आपकी कृपा, आपके सत्य साया में सुरक्षित है, सेफ है, सही है, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सब पूरे परिवार ठीक है, उसके लिए शुक्राना। बाकी सब अभी देख लेना बाबा, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेज़ी से कहाँ भागी जा रही हो, या तेरे पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म है उनको आज मैं काट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज भी नहीं बनता कि मेरी इनकी इसको एक भक्त तक पहुँचा दे। किस बात कर इतना संकोच करती है, इससे मेरी आशीर्वाद है, शेयर कर, इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू बस हमेशा कमज़ोर महसूस करती है, टेंशन क्यों लेती है। जब हूँ तो शुक्राना, जब भी शुक्राना दर्श होगा, बस उसी पल तेरे कल्याण। शुक्राना बाबा, मैं सारी भक्ति तक पहुँचा दिया है बाबा। और जो भी मेरे इस जन्म की माड़ी कर्म है व पिछले जन्म की माड़ी कर्म है, गुरुजी आपने काट रहा है हमारा पूरी कर्म बाबा। उसके लिए मैं आपको तो अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। और मैं क्यों टेंशन लेंगी गुरुजी, सब स्वयं मेरे प्रभु का हाथ हमारा सिर पर है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है गुरुजी। जो भी होगा मेरे गुरु पिता देख लेंगे। मेरे गुरु पिता मेरे लिए हर पल अच्छा ही करेंगे। और हम लोग पूरा परिवार गुरु का कृपा से सही है, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मैं तो हर पल का आपका शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं, तेरे शरीर की सारी तकलीफ दूर कर देती, जल पे साथ पिलाकर रोज़, यही तेरी दवाई है, जा तेरे कल्याण की याश कर। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो हर दिन सुबह सुबह आपका हमारा जल प्रसाद पूरा परिवार हम लोग पिला रहे हो, उसके लिए शुक्राना बाबा। आपका जल प्रसाद हमारे लिए अमृत है, हमारे लिए दवाई भी है, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा बीमारी दूर करने के लिए भी शुक्राना, इतना साथ देने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे माँ का हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, मेरे बड़ी अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दादा दीदी का परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सत्संग में आज यही परिणाम देती हूँ। और संगत जी, बोलने में कुछ मेरे से भूल हुई तो क्षमा करना सभी संगत जी, सामूहिक क्षमा करना। मेरे प्यारे पिता
तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत का कल्याण करना, सर्वदा सबका भला करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर सुबह के 7:16 हुए हैं और आज की तारीख है 5 अप्रैल और दिन है रविवार का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज का ये दिन देने के लिए, आज का ये पावन दिन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बाबा, आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, और ये हम ले रहे हैं ए बुक से, द माइंडफुल पाथ टू सेल्फ कंपैशन, फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड इमोशंस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी हमें इस बुक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, द सफरिंग इटसेल्फ इज नॉट सो बैड, इट्स द रिसेंटमेंट अगेंस्ट सफरिंग दैट इज द रियल पेन। रिटन बाय एलन जिन्सबर्ग, पोएट। आगे पढ़ते हैं। I am afraid of what you are about to tell me, 'cause it probably won't work. Michelle blurted out, fully expecting to be disappointed by what I had to say. Michelle had just finished telling me about her years of struggle with shyness, and I was taking a deep breath. Michelle struck me as an exceptionally bright and conscientious person. She had read many books on overcoming shyness and tried therapy 4 times. She didn't want to be let down again. She would recently received an MBA from a prestigious university and gotten a job as a consultant to large firms in the area. The main problem for Michelle was blushing. She believed it signaled to others that she wasn't competent and that they shouldn't trust what she had to say. The more she worried about blushing, the more they actually blushed in front of others. Her new job was an important career opportunity, and Michelle didn't want to blow it. I assured Michelle that she was right. Whatever I suggested wouldn't work. That's not because she was a lost cause. Far from it, but rather because all well-intentioned strategies are destined to fail. It's not the fault of the techniques, nor is it the fault of the person who wants to feel better. The problem lies in our motivation and in a misunderstanding of how the mind works. As Michelle knew only too well from her new years of struggle, a lot of what we do to not feel bad is likely to make us feel worse. It's like that thought experiment. Try not to think about pink elephants, the kind that are very large and very pink. Once an idea is planted in our minds, it's strengthened every time we try not to think about it.
Sigmund Freud summed up the problem by saying there's no negation in the unconscious mind. Similarly, whatever we throw at our distress to make it go away, relaxation techniques blocking our thoughts, positive affirmations, will ultimately disappoint, and we will have no choice but to set off to find another option to feel better. While we were discussing these matters, Michelle began to weep gently. I wasn't sure whether she was feeling more disheartened or in some way the truth of her experience was being articulated. She told me that even her prayers were going unanswered. We talked about two types of prayers: the kind where we want God to make bad things go away, and the kind where we surrender, let go, and let God. Michelle said it had never Michelle said it had never occurred to her to surrender her troubles to God. That wasn't her style. Gradually, we came around to what could be done for Michelle that might actually decrease her anxiety and blushing. Not deep breathing, not pinching herself, not drinking cold water, not pretending to be unflappable. Since Michelle wasn't the kind of person to relax her efforts, she needed to find something entirely different. Michelle recognized that her anxiety decreased the more she accepted it, and it increased the less she accepted it. Hence, it made sense to Michelle to dedicate herself to a life of accepting anxiety and the fact that she was simply an anxious person. Our therapy was to be measured not by how often she blushed, but by how accepting she was of her blushing. That was a radical new idea for Michelle. She left out first session elated, if a bit perplexed. She sent me an email during the following week, happily announcing that it worked. Since we hadn't discussed any new practices, I wasn't sure what Michelle meant. Later, I learned that she had begun saying to herself, just scared, just scared, whenever she noticed she was anxious. Labeling her fear seemed to take Michelle's mind off how flushed her face felt, and she was able to chat briefly with colleagues in the lunchroom without incident. For example, she was relieved to feel more like a scared person getting lunch than like a weak, overly sensitive, ridiculous person who didn't know what she was talking about. I marveled at how Michelle had taken the concept of acceptance and invented a useful technique in such a short time. At our next meeting, however, Michelle was discouraged again. Her forays into the lunchroom once again became a battle against the blush. Her original wish to stop looking anxious reasserted itself. Acceptance had begun to work for Michelle, but she would let go of her newfound commitment to cultivate acceptance. She mistakenly believed
she would found a clever bypass to her problem. Unfortunately, we can't trick ourselves. There was a part of Michelle that was saying, I am practicing acceptance in order to reduce anxiety. But that's not acceptance. Within modern psychology, acceptance means to embrace whatever arises within us, moment to moment, just as it is. Sometimes it's a feeling we like, sometimes it's a bad feeling. We naturally want to continue the good feelings and stop the bad ones. But setting out with that goal doesn't work. The only answer to our problems is to first have our problems, fully and completely, whatever they may be. Michelle was hoping to skip that part. This story has a happy ending, which was reached slowly over the course of 2 years. Michelle discovered how to live in accord with her sensitive nervous system. Relapses reliably occurred when Michelle tried not to blush, but she hardly blushed at all when she was ready to let blushing take its course. As Michelle made her peace with blushing, she found she could apply the same principles to other stress symptoms that inevitably arose during her day: tension in her chest, headaches, heart palpitation, and her life became much easier. This is a book about how we can benefit by turning toward our emotional pain. That's a tall order. Any thinking person any thinking person is likely to ask, why would I want to do that? In this chapter, you will see why it's often the best thing to do. The rest of the book will show you how to accomplish this improbable task. First, you will learn how to bring mindful awareness to what's bothering you. Then, you will discover how to bring kindness to yourself, especially when you are feeling really bad. That combination, mindfulness and self compassion, can transform even the worst times of our lives. Turning toward the pain. From the moment of our birth, we are on a quest for happiness. It may take no more than mother's milk to satisfy us in the first days of our lives. But our needs and desires multiply as we age. By adulthood, most of us don't expect to be happy unless we have a nice family, a good job, excellent health, lots of money, and the love and admiration of others. But pain still strikes even under the best of circumstances. Billionaire Howard Hughes found himself desperate and alone at the moment of his death, and our circumstances inevitably change. One person's marriage may fall apart, another may have a child with a developmental disability, and yet another may lose everything in a flood. People differ from one another in the amount of suffering they endure over a lifetime, or in the type of suffering, but none of us gets off without any. Pain and suffering are common threads that unite all of humanity. Pain creates a conflict between the way things are
and how we would like them to be, and that makes our lives feel unsatisfactory. The more we wish our lives were different, the worse we feel. For example, if a car accident lands someone in a wheelchair for life, the first year is usually the toughest. As we learn to adapt, we typically return to our former level of happiness. We can measure our happiness by the gap between what we want and how things are. Most of us believe that our happiness depends on the external circumstances of our lives. Therefore, we spend our lives on a treadmill, continually arranging to have pleasure and avoid pain. When we experience pleasure, we grasp for more of it. When we experience pain, we avoid it. Both of these reactions are instinctive, but they are not successful strategies for emotional well-being. The problem with pleasure seeking is that the pleasure will end at some point and will become disappointed and we will become disappointed. We fall out of love, our bellies become full, our friends go home. The people will avoiding pain is that it's just not possible to do, and it often gets worse with our increased efforts to try. For example, eating to reduce stress can cause obesity, and working excessively to overcome low self esteem can land you in the grave. It's possible to be completely controlled by the instinct to seek pleasure and avoid pain. I know a man, Stewart, who took great pleasure in drinking alcohol when he was younger. He started drinking when he was 14 years old. By the time Stewart was 20, he routinely drank a case of beer, 24 cans per night. One evening, he had a panic attack while he was drunk, and it is so frightened him that it so frightened him that he never drank again. Beer, the source of so much pleasure, had become terrifying overnight because he associated it with the panic attack. Stewart then stopped going anywhere or doing anything that could possibly trigger a panic attack, including other things he used to enjoy, such as driving his truck around town and going to baseball games. First, the pleasure of alcohol dominated his life, then the fear of a panic attack did. Stewart was a hostage to these short-term states of mind, pleasure and pain. A new approach is to change our relationship to pain and pleasure. We can step back and learn to be calm in the midst of pain. We can let pleasure naturally come and go. That's serenity. We can even learn to embrace pain as well as pleasure and every nuance in between, thereby living each moment to the fullest. That's joy. Learning how to spend some time with pain is essential to achieving personal happiness. It may sound paradoxical, but in order to be happy,
we must embrace unhappiness. For 40, embracing misery in marriage. For 14 years, psychologist John Gottman and colleagues at the University of Washington tracked 650 couples to discover what made marriages successful. He says he is able to predict with 91% accuracy which couples will end up in divorce. They are the ones who practice criticism, defensiveness, contempt, and stonewalling. The four horsemen of the apocalypse. Gottman also observed that 69% of marital disputes are never resolved, especially arguments about core personality issues and values. Since couples don't resolve most of their personal differences, successful couples somehow learn to accept them. Happy couples know each other intimately and they are well versed in each other's likes, dislikes, personality quirks, hopes, and dreams. Psychologists Andrew Christensen and Neil Jacobson developed an acceptance based couple therapy. Integrative couple therapy. This approach uses behavior therapy to address problems that can be changed and acceptance for problems that can't change. Acceptance means embracing problems as a path to intimacy and relinquishing the need to change one's partner. In a randomized, controlled study of 6 months of weekly couple therapy, two-thirds of couples that were chronically distressed before treatment remained significantly improved 2 years later. Jai Guruji, Shukrana Guruji. What we resist persists. There's a simple formula that captures our instinctive response to pain. Pain multiply resistance equals suffering. Pain refers to unavoidable discomfort that comes into our lives, such as an accident, an illness, or the death of someone we love. Resistance refers to any effort toward off pain, such as tensing the body and ruminating about how to make pain go away. Suffering is what results when we resist pain. Suffering is the physical and emotional tension that we add to our pain layer upon layer. In this formula, how we relate to pain determines how much we will suffer. As our resistance to pain is reduced to zero, so is our suffering. Pain times zero equals zero. Hard to believe. The pain of life is there, but we don't unnecessarily elaborate on it. We don't carry it with us everywhere we go. An example of suffering is spending hours and hours thinking about how we should have sold our stocks before the market collapsed or worrying that we might get sick before a big upcoming event. Some amount of reflection is necessary to anticipate and prevent problems, but we often get stuck regretting the past or worrying about the future. Pain is inevitable, suffering is optional. It seems that the more intense our emotional pain is, the more we suffer by obsessing, blaming ourselves,
and feeling defective. The good news is that since most of the pain in our lives is really suffering, the result of fighting the experience of pain, we can actually do something about it. Let's take a look at four common problems: lower back pain, insomnia, anxiety about public speaking, and the relational conflict, and start to consider how they can be alleviated by acceptance and letting go. The benefit of worry. Why can't we seem to stop worrying? Tom Borkovic at the Pennsylvania State University asked 45 students who were afraid of public speaking to imagine a scary scene 10 minutes. Imagine you are about to present an important speech to a large audience. As you stand there, you can feel your heart pounding fast. Before doing that, Borkovic had three different groups engage in relaxed, neutral, or worrisome thinking. Then, while they imagined the scary scene, he measured the students' heart rate. Surprisingly, the group of students who were instructed to worry beforehand beforehand had no increase in heart rate compared to those who didn't. This means that worrying actually stopped the body from being aroused by fear, which unconsciously encourages us to worry more. Unfortunately, those participants who worried in advance actually felt more afraid while actively visualizing a scary situation, even though the heart rate didn't increase. Chronic back pain. Chronic back pain is a debilitating ailment. Unfortunately, it's very common in the United States, affecting at least 5 million people at any given time. 60 to 70% of Americans get lower back pain sometime in their lives. Surprisingly, two-thirds of people without chronic back pain have the same structural back problems as those who experience pain. So, what's going on in the bodies and minds of those suffering from chronic pain? Resistance. Let's consider the case of Meera. Meera is a 49-year-old yoga enthusiast with a successful business career. She is not the kind of person you would expect to have back pain, except that she pursues all her activities with uncommon zeal. During the particularly strenuous yoga session, Meera felt a twinge while doing a forward bend. She then felt her sciatic nerve tingle right down to her calves. Almost any position except standing straight up or lying flat gave her back pain. An MRI, magnetic resonance imaging, diagnosed her with a herniated disc, a painful condition where the bones of the spine squeeze the disc out against a nerve. Meera stopped doing yoga and saw a physical therapist who taught her to lift objects in such a way that her back stayed straight and didn't give her any pain. But over time, her back hurt more and more. She was also deeply unhappy that she couldn't exercise vigorously.
her primary way of relieving work stress. She envisioned a lifetime without mountain climbing, bicycle riding, or yoga. Meera also blamed herself for causing her disc to herniate in the first place. The combination of worry, self criticism, mounting tension from inactivity, and increasing back pain convinced Meera to turn to surgery. Prior to her operation, Meera did some research and learned that the long-term success rate of back surgery for herniated discs was no better than having no surgery at all. She also read Ronald Siegel's book Back Sense, which explains that for most sufferers, the The most valuable treatment for a herniated disc is to reduce anxiety about the pain and resume normal activities as soon as possible. That meant lifting objects in roughly the same manner as always so that the back muscles don't atrophy from inactivity. Meera found out that persistent muscle tension, not structural abnormalities, causes most chronic back pain, and muscle tension increases both when the muscles are not used and when we worry. On top of this, worry amplifies pain signals, further adding to our experience of pain. Meera took these messages to heart. She got massage therapy for her sore muscles, used a heating pad every evening, and began exercising in moderation. Her anxiety decreased as her pain subsided, and her back pain diminished by 50% in less than 2 weeks. Most people who suffer from chronic back pain will say that Meera was just lucky and an exception. Actually, she's the rule. Ironically, the prevalence of chronic back pain is lowest in developing countries, where people do more back-breaking work than in industrialized countries. An injury is usually the trigger for a back problem, but injury isn't what sustained Meera's back pain. Her resistance to the pain, especially fearing that she wouldn't be able to continue her vigorous lifestyle, pulled Meera deeper and deeper down into her health crisis. Acceptance of physical pain and working with it returned Meera to her normal life. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, पेज नंबर 18। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का भाग हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।